जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, उसके पीछे भी जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उस प्रॉब्लम्स का टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम लेके आए और अपने बिजनेस को रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे बिजनेस में बहुत सक्सेस मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इस विषय पे ज़रा ज़्यादा बोलना चाह रहा था कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में हमने कई कंट्रीज से किया हुआ है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी हम डोमेस्टिकली केवल 20 से 25% ही हम उसका बेनिफिट उठा पाते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को 60 से 70% बेनिफिट्स उनके आते हैं। तो हमें वी शुड स्टडी व्हाट आर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, व्हाट आर द प्रोविजंस वेयर वी कैन वर्क ऑन देम एंड देन do in those fields. So that is very important. Formalization, regional और global supply chain के साथ integration, task mobility के माध्यम से कैसे हम काम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे benefit की तरह उठा सकते हैं, इसको देखना चाहिए। और जो और भी जो सारे एरियाज हैं, मान लीजिए हम एक बात करते हैं और ऑटोमेशन पैराडॉक्स की। आज ग्लोबल लेवल पे एआई के बारे में आज आप लोगों ने चर्चा की थी कल पे। एक तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को एआई तुरंत डेवलप कर सकता है और रोबोटिक्स में उसको मल्टीपल लेवल पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो यूनिकनेस है वह उस प्रोडक्ट की खत्म हो जाती है। और भारत में जो सांस्कृतिक विरासत है, हैंडीक्राफ्ट, फूड, आर्ट, म्यूजिक, डांस, कल्चर, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन सब के अंदर जो यूनिकनेस है, हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी है। इन प्रोडक्ट्स को अगर हम डेवलप करते हैं तो ये जो नीरसता आने वाले समय में आने वाली है ऑटोमेशन पैराडॉक्स के कारण, तो हम भारत के अंदर इन प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। उन ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने के लिए आज किसी रिमोट एरिया में भी कोई मैन्युफैक्चर करता है, बट उसको मार्केट एक्सेस ऑनलाइन ई-कॉमर्स फैसिलिटी के माध्यम से मिल जाती है। तो वो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स का डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विरासत के लिए जो हमारे वीविंग है की फैसिलिटीज़ है, जीआई प्रोडक्ट है, इनके अंदर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है, इनके अंदर हम बिजनेस डेवलप करते हैं। तो यह बिजनेस डेवलपमेंट हम लोग ग्लोबल लेवल पे उन प्रोडक्ट को सेल करके हमारे डेवलपमेंट के मॉडल को रूरल, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव, हैंडीक्राफ्ट, इन तरह के जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत का जो यूनिकनेस है, एवरी प्रोडक्ट हैज़ ए स्टोरी टू टेल, एवरी प्रोडक्ट हैज़ ए ग्लोबल रीच, जिसकी अब आपने प्रादा का भी देखा होगा कि कोल्हापुरी चप्पल वो 700-800 रुपए में मिलती है, लेकिन प्रादा इज सेलिंग इट फॉर 84,000 पर चप्पल। तो ये जीआई प्रोडक्ट अकेले वाराणसी में केवल साड़ी के ऊपर 35 जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स उन्होंने रजिस्टर कर दिए। एक आज हमारे पास भारत में, जबकि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इतनी है, बट केवल 600 के करीब ही हमारे पास जीआई प्रोडक्ट है। आने वाले समय में सरकार ने टारगेट किया है 3 साल में कि हम 10,000 जीआई प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे। तो दीज आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे स्पेस में अभी बताइए, ऐसे डिफेंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और डिफेंस का जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अपने आप में they are clearly putting up lot of armed forces। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे महत्वपूर्ण बात आई थी कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वो आर्म फोर्सेस अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यू कम आउट विद टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू देम, दे अरेंज हैकेथॉन एंड गिव फंडिंग टू 5 करोड़ टू 50 करोड़ की सीड कैपिटल की फंडिंग करते हैं। तो डिफेंस में है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ऐसे पीएसयूज भी हर पब्लिक सेक्टर। आई हैव बीन वर्किंग इन मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव पुट इन देयर वेबसाइट what are the process challenges and what are the product challenges. You can come out with some solutions, find out what are the
solutions to those processes and problems. जैसे oil sector में हम काम करते हैं, there are various processes which are challenges. If you come out with solutions, the PSU will give you the funding for doing research and development of the product. Then they will also give you funding for developing that product and also ensure that once you develop that product, they will buy that. तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम डेवलप कर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं. दीज आर बिग अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग फॉर विकसित भारत एंड इंडिया. और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम करेंगे अपने वर्किंग में और एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट में, तो वी कैन अचीव अ लॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Okay, nice to hear that, sir. Sir, the same question with a new remark. जो आपने कहा उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि इतने सारे इनफॉर्मल MSMEs को हाउ टू फॉर्मलाइज एंड जॉइन द फॉर्मल इकोनॉमी, और उनके लिए की जो फंडिंग है जो ऑन पेपर तो दिख रही है बट इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली वाया PSU बैंक और प्राइवेट बैंक. तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट मी डिस्कस दैट देयर इज वन स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम CGTMSE. उसकी लिमिट तो 20 CR 10 CR जितनी कर दी है, पर फिर भी आज बड़ी बड़ी बैंक्स 2 करोड़ से ज़्यादा देने के लिए कोलेटरल मांगती है. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द सेम? एंटरप्रेन्योर को कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, बट उसको स्केल अप करने की जब बारी आती है, आफ्टर कन्वर्टिंग अ प्रोटोटाइप इनटू अ प्रोडक्ट एंड देन कमर्शियलाइजिंग इज अ चैलेंज नाउअडेज. सो व्हाट आर योर थॉट्स फॉर द सेम? See, Government of India has brought in a lot of schemes, and in particular you spoke about Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprise, CGTMSE. This is a very good scheme, right? And for the manufacturing sector, they can avail the bank finance up to 10 crores, and for the service sector up to 5 crore without any collateral, right? So I'll tell more about these schemes. And apart from these schemes, there are many other schemes, you know, like Mudra, PM Swanidhi. In the last couple of years, government has brought in a lot of sectors into this MSME, like trading activities, or a lot of activities have been added to MSME sector, so that the ambit has become bigger. And at the same time, there are some policies have been framed, like when we procure something, any PSU, or then compulsorily we have to give the preference to the make in India. Right, there are various products, IT related products or services. There are many vendors globally also, but we prefer as per Government of India Make in India guidelines. Okay, and there we give some relaxation in the eligibility. Right. Similarly, when we procure anything, we have to procure from the GEM portal, Government e-marketplace. Right, that is compulsory. So that gives another opportunity for the MSME. Right. If any MSME is not into the formal sector or not registered, then they lose the opportunity to come up and sell on the GEM portal. They lose the opportunity to come and bid in the under the Make in India scheme, right? And all of you also know that lot of compliance burden has also been reduced by Government of India. I think almost more than 20,000 compliances has been reduced to almost 1,000 in the last 5-6 years, right? And government is further working to reduce the compliances, and that is one of the reason that India has got a very good rank under the ease of doing business, okay, globally, right? Then there are various certification also government gives, because certification for the MSME product is very important, particularly for those products which are being exported outside the country to various countries. If these certificates are not there, the other countries may not import those products from India, or because quality of the MSME products
particularly under the export segment, is an issue for our country. That's why you have heard about the Z certification, zero defect and zero effect. That is very, very important, right? So all these measures ensure that India continues to focus on the MSME segment, right? So when all these compliances, certification coming into the formal comes into the picture, there are various MSMEs, due to their knowledge gap, right? They think that these compliances are burden to them, right? And there are various facets to it. If they need a finance, they have to go to bank. If they need certification, they have to go to different agency. If they need any, GST or taxation related work, they have to go to CA or some firm. If they need any legal, compliances or guidance, they have to go to some lawyer. So you can say one MSME unit has to approach so many agencies or the persons. That is a challenge. That is a challenge for an entrepreneur, because one person cannot have all the expertise. One person cannot have all the knowledge. This is a big challenge. That is one of the reasons that many MSMEs do not like to come into the formal sector, right? So this gradually is become reduced, because as I said, lot of these services are become digitized. Now there are agencies or fintechs in the market. If an MSME goes to them, they will provide all the services at one platform. And we are also doing at Central Bank of India. We give the finance, we give the advisory services also, that these are the elements you need to follow, which will help you into grow. And any point of your journey for 1 year, 2 years, 3 years, these are the compliances you have to do. These are the areas where you need to focus. So coming back to CGTMSE scheme, where you can get 10 crore or 5 crore in service sector, this CGTMSE scheme is very, very popular nowadays. Why it is popular? As my friend said, that without collateral you get the money to set up the business under manufacturing and services sector, and government is also very keen. Under CGTME scheme, not only the finance you get, but you have to also contribute towards the insurance premium of the CGTMSE. Like 75% of the loan is covered under the CGTMSE guarantee fee. If the loan becomes bad, the CGTMSE unit agency provides the guarantee, and this guarantee cover, there is some discount also for the women, SC, ST, OBC, transgender, Agniveers also in the premium amount, right? The premium you have to give share, or the bank also do something about it. So the concept that banks are averse towards giving the loan without collateral is not correct. I'll tell you what the banks see in an entrepreneur, right? The first and foremost is, what is your business model? Business model means whether the product or the service or the unit you want to set up, have you done the macro environment research or study, right? Like Somnathanji said, if there are number of entrepreneurs in the same segment, the demand is not much or there are some issues, definitely bank will averse to that. Whether your product is innovative or you are bringing new technology, or the technology you are bringing, maybe it may so happen that after 2-3 years it may become ISO, and then some new technology comes. Like for example, you see the UPI, right? UPI, there are so many fintechs, vendors which is using UPI as a tech, and on the based on the UPI, they have developed different product and services, and all of them making a lot of profits, right? So your idea, your technology, your product, your services, your unit, if it is conducive to the bank, there is no problem in getting the loan, right?
When I talk about zero collateral, it is zero collateral absolutely, but the land where the unit is established, the plant and machinery you put, automatically it becomes the bank. I mean, kind of mortgage this thing, right? But it is your unit, you have put in the money. The another challenge when you put the money, the biggest gap is how to market, whether you have any marketing linkage so that your supply chain is established. Those kind of numbers and your vision is looked into by the bank, right? एक मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि एक बेसिकली वी हैव हैबिट ऑफ ओनली डिपेंडिंग अपॉन द बैंक लोन एक्सेट्रा. क्रेडिट के लिए देर आर अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. जैसे एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज सरकार ने बनाया, हमारी सरकार ने. उसमें क्या है कि दोज हु आर डूइंग गुड वर्क फॉर द सोसाइटी एंड ऑल्सो वांट टू अर्न आउट ऑफ दैट लिविंग, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज में a registration platform is there where good projects can be listed, and those companies who want to finance, whether through CSR or through cloud funding etc., they get registered. Financer also get registered and your project also get registered, which have good value creation for the country. तो social entrepreneurship के लिए social stock exchange डेवलप किया है. जैसे मैंने बताया कि डिजिटल इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करता है 5 से 50 करोड़ का. ऐसे ही ये जो है ग्रीन फंड है सरकार का, MSME गिफ्ट, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे फंड्स हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अभी 1.25 लाख करोड़ का अनुसंधान फंड सरकार ने बनाया है. देन सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट टू प्रोडक्ट, वेल्थ क्रिएशन के जो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, उसमें MSME स्पेस करके सरकार का फंडिंग है. तो ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए फंडिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग अलग फंड्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ग्रीन वेंचर कैपिटल ग्लोबल लेवल पे. इफ़ यू आर क्लाइमेट कंप्लायंट प्रोजेक्ट है आपका, तो ग्लोबल लेवल पे वेंचर कैपिटलिस्ट तरीके से भी फाइनेंस करते हैं. और एक सरकार और इनिशिएटिव ले रही है कि कोलेट्रल के अलावा यू हैव अ डिजिटल एसेट्स, योर GST ट्रांजेक्शंस, योर UPI ट्रांजेक्शंस, योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, दे बिकम योर क्रेडिट हिस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए more and more banks and financial institutions are being encouraged for to use those digital assets as a creating a credit history and credit justification for that. तो ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर भी सरकार बहुत ध्यान रखना चाहिए, in addition to only depending upon bank credit. तो इसमें सर आई वुड एक मैं ऐड करना चाहूँगा. जैसे सर ने बोला जो क्रेडिट असेसमेंट वाली बात है, तो आजकल जो हम बहुत नए यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं जिनको हम लोन दे रहे हैं, दैट इज बेस्ड गिवन ऑन द बेस्ड ऑफ क्रेडिट असेसमेंट मॉडल वी कॉल्ड CAM मॉडल. एंड what we see the digital footprints of the customer. Digital footprints in the sense, like sir has told, like your UPI transactions, it is digitally available. And how we get the data? This through the account aggregator ecosystem. So account aggregator you must be knowing, like there are many this account aggregators in India, which through which we fetch the account statement of the customer, which are in all the banks. Right, we get the account statement, digital footprints, lot of data we get digitally, and all this data is available digitally without any hassle. Like within 1 to 2 minutes I can get the customer CIC report, the customer account aggregator, all the accounts in different banks, then customer PAN I can verify digitally, customer Aadhaar I can verify digitally, customer income tax return I can fetch digitally. So all these customer specific data is available digitally. I can run my business rule engine, and within 5 minutes I can tell how much loan this customer can get. Right? No manual paper is required, and this is available in all the banks. And immediately the in principle sanction letter is generated.
email to the customer or WhatsApp goes to the customer, he can come for the documentation. So it's already there. Digital footprints based lending is very much prevalent nowadays, and all the banks are doing it, right? ये जो बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म स्ट्रीट्स के बारे में कितने लोगों ने सुना है? यहाँ सुना है? बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म सरकार ने डेवलप किया है. If you have raised any bill, supplied anything or any to the large companies which have turnover of more than 500 crores or which are public sector undertaking or department, you can put your invoice on the digital bill discounting platform, treats platform, और वहाँ पे बैंक्स आके उसको डिस्काउंट कर देते, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसमें. तो मेरा ये कहना है कि डोंट थिंक ऑन डिपेंड ओनली ऑन बैंकिंग, फाइनेंस एंड क्रेडिट. गो फॉर, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, available options where you can go even at the international level also. Bank of Tokyo and Mitsubishi, Japan के funds हैं, they are ready to invest heavily into Indian industries etc. They are giving huge funding और वो बहुत सस्ते रेट्स पे दे रहे. तो look into various other funds, schemes, government scheme, bill discounting, other thing, digital assets etc. which will create credit availability and funding to your business. Okay, I think it is very helpful for all of us to know these schemes. A question to Keshav sir. Only a small fraction of MSME managed to grow, which we have discussed, into large enterprises. Okay, roughly around 50,000 firms transiting from medium to large scale in last 4 years. So from your experience, how can MSMEs differentiate and how can they be successfully scaled from medium to large scale? Interesting. So, just as a context, the question is relevant for larger enterprises also, who are not able to compete with even larger enterprises. I think the world has come to help all of us out, is that we can use the platforms available online, from developing our ideas, customer acquisition, reaching out to market, reaching out to money lending platforms. There are so many online platforms to raise money outside of the respected banking system. You can raise equity money on the online platforms. You can pitch your ideas. You can get product development outsourced. You can get product scale up outsourced. You can get piloting done. You can get distribution done online. You can get the collection done online. So one aspect that all of us, we need to figure out, depending on agri, manufacturing, services, whichever segment we are in, and how to use the technology to our advantage. There's a huge alpha cost advantage in using these services. That is one. Second thing is that it's ultimately an open market. It's a global open market. You can have a short-term advantage with some walls, green walls, protectionism, and this and that. You have to make your product worthwhile for the market. And the only way to do that is to, again, like I mentioned earlier, is to get ideas from outside into our mind, from our competitors, state, country, international. A very large part of ecosystem in Japan, in Europe, works on MSME. Almost as large a population that India. Similarly, in those countries, developed economies also relies and delivers their livelihood via MSME business segment. We need to be able to imbibe those values. It can be as small a thing as customer acquisition, a digital extension of our marketing brand. A few of the ecosystem in India has grown in the last about 3 years from 0 to 1,000 crore revenues, and entirely via just putting their product online. That's second. Third one, which I think many of us are able to don't appreciate as much, is the government schemes. Like sir mentioned, government does enough and more. The online portal is reduced to just 5 lines now. You need to put your Aadhaar card, put your name, entity, some registration number, then you get a portal registration. That allows access to the banking system. That allows access to the online platforms. That allows a larger enterprise like our ecosystem to buy products from the MSMEs. We need to just access those government platforms. Very honestly, more than this, government cannot do.
The kind of money they dole out, the kind of incentives they provide, the kind of ease of doing business they provide, single window clearances across the states now, it's there. We just need to access those platforms, and maybe awareness will come out by reaching out to the government body with that. एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी फॉर स्केलिंग अप। यूरोप और जापान में क्या हो रहा है, द पॉपुलेशन इज एजिंग। तो मुझे अभी किसी से बात हुई थी, दे हैव डन गुड वर्क इन दिस एरिया, इज अबाउट देयर आर लॉट ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट देयर आर नो पर्सन्स हु कैन रन दोज बिजनेस। वो बड़े सस्ते रेट पे, मतलब बहुत सस्ती कॉस्ट पे वो इंडस्ट्रियल सेटअप विद टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल। दे विल टेक वेरी लिटिल अमाउंट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, और उसमें आप स्केल अप कर सकते हैं। दोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच हैव टेक्नोलॉजी इन यूरोप एंड जापान एक्सेट्रा, यू कैन गेट इनटू दैट। और फाइनेंसिंग भी इंटरनेशनल एजेंसीज कर देंगी, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है। दोज अपॉर्चुनिटीज आर, some industrial houses, some businesses, small businesses are doing good work, taking over those industries with technology and manufacturing facility at international markets। और उसके लिए आपको क्या है कि ट्रेड फेयर्स वगैरह में, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड फेयर्स वगैरह, उसमें पार्टिसिपेशन कर दें। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है विच हेल्प दोज हु वांट टू डेवलप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप टू पार्टिसिपेट इनटू दो ट्रेड फेयर्स। तो ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आज के समय में है यूरोपियन लेवल पे। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है, एक और लघु उद्योग भारती के साथ मैं बैठा था, वो बता रहे थे कि ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी है, सीएसआईआर है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वेलोर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के है, बिट्स है, इनके पास हजारों ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिनको वो कमर्शियली वायबिलिटी है, बट दे हैव नॉट यूज्ड इट। यू कैन यूज दोज टेक्नोलॉजी, इवन पीएसयूज आर आल्सो हेल्पिंग इन देम। कि आईआईटी मद्रास के साथ हमारे प्रोजेक्ट है, पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं था तब भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे कई, कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी को आप कमर्शियली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। टेक्नोलॉजी, एकेडमिक इंडस्ट्रियल कनेक्ट इस्टेब्लिश करें, ग्लोबल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को टेकअप करें, ऐसे चीज़ों को भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन स्केल अप योर बिजनेसेस। और एक सवाल सर, थ्रेट्स टू एमएसएमई और इट इज़ अ ब्लिस, दोनों चीज़। ऑटोमेशन आ रहा है, अब पॉल्यूशन को लेके गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है, जिसके लिए काफ़ी सारी एमएसएमईज को पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होती जा रही है। और जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन बॉडी एडजस्टमेंट है, उसके बारे में सर गवर्नमेंट का क्या कहना है और वो उसको किस तरीके से देख रही है? पहले महेंद्र सर। इसमें जो आई टोल्ड, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग एरिया, क्लाइमेट finance, or you can say climate related issues, right? So if we compare globally, we are one of the country where the carbon emission is very high, right? And recently this, if you have read about this COP30, right, where all the country participated in Brazil on climate finance, and the issue was how to fund these climate related carbon emission, right? And the kind of money required across the globe, it is not available, right? If MSMEs or the businesses has to do the transmission from the current level to the zero carbon or less carbon unit or MSME or country, then a lot of fund is required in terms of technology, in terms of community development. A lot of issues are there, but we don't have any option. Why we don't have any option? We have to do it. The first major reason is as a responsible citizen, as a responsible country, we have our responsibility towards our next generation. So when we have to leave the earth safe, secure and clean, right? That is the biggest responsibility for all of us. So until we take those initiative towards reducing the carbon emission, then all of us know that kind of climate related issues
globally we are facing, and in particular India, right? You see lot of disasters are taking place. Nowadays it is very difficult to predict the weather or the timing of the season. The way it's happening, it is more than our expectations, and this will have direct and indirect impact on everyone. Everyone means individual, communities, banks, MSME, businesses, everyone will be suffered, right? Like you have seen lot of landslides. The units, the shops which were located there gone. The bank money has gone. The insurance money has gone. Ultimately, it is a loss, right? So climate finance or climate related issues, to handle them is extremely important. So what the government has done, some of the issues have been already taken by the government. RBI has also released some framework for green finance, green deposits, right? And even SEBI has made it mandatory for top 1,000 listed company to submit BRSR report, this business responsibility and sustainability report. So India is moving towards this climate related finance or issues. Green bonds are being issued in the country, but we are far behind from the other major economies of the world. So you spoke about this CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. So like now some of the countries like UK and European Union, if India is to export, India is a big exporter of the steel. So if India has to export the steel, then the duty is very high because of this CBAM. Duty is very high because the carbon emission is very high in India, right? So these are the business related challenges. Our export will suffer, our units will suffer. We don't have that kind of finance to make the transition from less carbon, right? So whatever the units are coming today, it is very important that they keep these things in mind, that their units are environment friendly, less emission or no emission, community friendly, right? Otherwise, the time will be very difficult for the country. Export will suffer, units will suffer, and of course, our generations will suffer. इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे कॉमर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं शायद। ये देखिए, इसमें जो इसकी जो बैलेंस शीट में दीज आर carbon, climate challenges, etc. are being used as non-tariff barriers also in the global context. तो हमें बैलेंस शीट पे इनको इनकॉर्पोरेट करने के मैकेनिज्म ढूंढने पड़ेंगे। जैसे सोशल कॉस्ट और एनवायरमेंटल कॉस्ट, they are not represented in our financial institution, financial statements, और उसके कारण कई चीज़ों के जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। अब जैसे ही आप एनवायरमेंटल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को किसी प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के अंदर डाल देंगे या बैलेंस शीट्स में उसको इनकॉर्पोरेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल देंगे, तो आपकी वैल्यूएशन भी बदल जाएगी और आपकी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट भी बदल जाएगा। तो उसके मैकेनिज्म हमें डेवलप करने चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंतर्गत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के अंदर। सरकार धीरे धीरे इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रही है। कई सारे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इस कारण से चेंज हो जाते हैं कि एज यू पुट द सोशल कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट इनटू देम, तो बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस में फ़र्क हो जाता है। बट वी नीड मोर इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल statement where you can incorporate this. So this gives a big opportunity. मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में हूँ, हम लोगों को लगता है कि for putting them into those institutions lot of work needs to be done. तो ये बहुत important चीज़ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स के रूप में भी यूज़ हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट, AI और ऑटोमेशन का क्या योगदान रहेगा? वो एम्प्लॉयमेंट कम करेगा या बढ़ाएगा? और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट की तरफ से सबके लिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे MSME को हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं,
तो वो MSME को किल कर रहा है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है और क्या उसके मिटिगेशन होंगे, और बैंकिंग क्या सोचती है? ऑटोमेशन और AI को लीड करने के बाद प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी पर एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? वी विल कंक्लूड वेरी फास्ट, तो बी प्रिसाइज इन इट। पहले तो आप जो कह रहे हो कि पॉल्यूशन से MSME किल हो रही है, दिस इज नॉट ट्रू, राइट? सर क्वेश्चन ये नहीं है पॉल्यूशन से नहीं, पॉल्यूशन के लिए बहुत सारे नए नए रूल्स आते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस आते हैं, GPCB के, मतलब कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के नॉर्म्स आते हैं, वो MSME के लिए वो कंप्लायंसेस काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। That is true. Compliances can be difficult because again I say it's a transition from polluting to non-polluting or less polluting to no polluting. The technologies are available. The cost may be very high, but we have no option. We have to do it, right? Because when see, we can't remain as a developing country. There are a lot of things have been done, and India, what we are targeting by 2047, right? We have to adopt these measures, first of all. Second thing is with respect to AI, right? AI, we can't remain behind with respect to other countries. AI is future, no doubt. There should not be any dilemma that AI will take away the jobs. AI will not take away the jobs, because see, when the computers came, everybody thought that computers will take away the job. The jobs have increased. The skill set will be totally different after AI. The knowledge level, the kind of qualification required, the kind of job roles required will be totally different. The jobs which may suffer may be the jobs which are lesser paid, the jobs which can be more automated, but at the same time, when the skill sets will increase, where the government has also started a lot of skill building programs, they will also bring AI skill building program also, right? So the kind of jobs will come under AI will be tremendous. So AI will not take away the job, it will increase the job market for everyone, right? I would like to add to that, just as a 30-second anecdote. Someone was mentioning it yesterday in the meeting that back in the days, Ambassador used to make 5,000 vehicles a year, 5,000 vehicles, and had a plant of 5,000 employees. Today, Maruti delivers about 1 million vehicles a year with same 5,000 employees, plus an entire plethora of MSME to support them. And similar other examples exist across the country. There is no doubt that automation helped, so will digitization help, but we are sitting in the heaven. We are sitting in the center of the world where this will get delivered. Average age of 28, 29, youth which can speak multiple languages. We have in our nature a DNA, a gene pool of being very hospitable. We are connected with the world digitally. There's a reason why majority of the Fortune 100 companies have Indian CEOs. We have to take advantage of it. And MSME is the bedrock of this entire advantageous position. There is zero possibility of threat. It's only an upside now for us. If half of the country still is not being able to use the services we provide, we don't even need to look outside. Our demand is sitting here, our supply is sitting here, our tools are sitting here, our entire ecosystem of finance is sitting here. Moreover than that, there has never been a time in the past when governments across center, state, district, bodies, entrepreneurs, business houses are so inclined to make India happen. There is not even a doubt on that. Money is available, ideas are available. There is no threat of digitization. It is a thing that will happen for sure. We can't sit in a cocoon thinking it will not happen. It will happen. But we need to be ready to harness the value out of it. मैं तो इसमें दो ही बातें अंडरलाइन करना चाहूँगा। इन्होंने मेरे को पैनलिस्ट ने महत्वपूर्ण बात की है। एक तो मैंने जब कहा था कि टास्क मोबिलिटी, एआई ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस ख़त्म हो जा रही है एआई से, तो टास्क मोबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। एनीथिंग, एनीवेयर, एनी प्रॉब्लम ग्लोबली, यू कैन सिट हेयर in your place and solve it. So task mobility giving a new opportunity with automation and AI एक चीज बात है। दूसरी
मुझे लगता है कि और भी महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं फिर से अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो है ऑटोमेशन पैराडॉक्स। जो ऑटोमेशन से, एआई से जो नीरसता जीवन में आएगी ग्लोबल लेवल पे, अगर आज जो हैंडीक्राफ्ट्स है, भारत के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उसके कारण हमारे सामने आ रही हैं। हमारे यहाँ पे अभी मैं उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम में गया था, योगी जी को एक शॉल भेंट की थी वहाँ पे उस इनॉग्रेशन में, और उस शॉल में उन्होंने पूरी रामायण को उसको वीविंग की थी, और उसने बोला 1 साल लगा था उसको बनाने। उसकी क्या वैल्यू होगी ग्लोबल लेवल पे, उसकी वैल्यूएशन ट्रिमेंडस होती जा रही है। तो हमारे पास जो सांस्कृतिक धरोहर है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, इसमें जो जीवन की नीरसता, जो ऑटोमेशन के कारण हमारे जीवन में एक रूपता, एक रास्ता आती है, उसको छोड़ के एक आने वाले समय में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन जो कल्चरल कंटेंट जो है हमारे पास, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसके साथ हमारे लिए कैटलाइज करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री भी काफ़ी कल्चरल इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। हमने देखा, चाहे कुंभ का मेला हो या अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ फोरम, आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब यहाँ से पार्टिसिपेशन करने के लिए स्मृति ईरानी जी गई थी, वहाँ से लौट के उन्होंने आके बोला कि वहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट ये था कि हाउ वी कैन इन्वेस्ट इनटू अयोध्या, व्हाट आर द प्रोडक्ट। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत नए वाले समय में आने वाली है। हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, जो डिफ्रेंशिएशन है चीज़ों का, वो अब हमारे लिए कैटलिस्ट करेगा। एक समय में आईटी ने हमारी इकोनॉमी को बहुत प्रोपेल किया था, आने वाले समय में सांस्कृतिक धरोहर, कल्चर हमारे को ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश करेगा हमारी इकोनॉमी को, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो टास्क मोबिलिटी, कल्चरल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद सर। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, पर सभा का भाव होने के कारण हम कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ के अटेंडीज से भी ले लें। माइक भेजो। Hello, namaste everyone. My question is for Keshav sir. Lately we have seen reports of major American and European hospital systems making hefty investments in EHR modernization and AI automation for streamlining clinical workflows. I want to know how prominent are conversations around this topic in the management level meetings of top Indian hospitals like Max. What kind of investments and solutions are being prioritized, number one. Number two, where will these be sourced from, these solutions? And number three, if you have any key expectations or advice to help guide someone who's involved in building such solutions. Actually, very relevant for this platform. As a context, so there are hospitals run on a back, any organization runs on a data being processed in a certain system. In this case, it's called EMR. US incidentally has two very evolved platforms, but they both failed massively in India. They both tried, they could not succeed. There are a few platforms from Australia, they failed massively in India. A few platforms were adopted in India back about 5-10 years back, which were developed in the European ecosystem, they could not work in India. It's a very Indian-centric, incidentally because my enterprise is a hospital setup, so I have those examples to give. Hospitals have a very large domestic information flow. The patient journey, the regulatory requirement, the way bills are settled, the way deliveries of services happen, it's very India specific, and it is not customizable if you use a bedrock of a base of a foreign enterprise. So what we are doing now is very relevant for this platform for me to quote is that we have partnered with domestic enterprises, IT organizations, who are working with our teams. They are MSMEs equivalent, they are smaller setups of about 50 to 150 employees, IT setups, and we are developing our platform ourselves. And I have a very deep understanding of my relevant other larger peers also. All of us are doing the same journey. And there is no other way out. We have to develop our product ourselves. It's 100% domestic doctors, nurses, regulation, patients, everything is in India, so we have to create our own products. There's no way out of it. Any question? Yes, please.
जय हिंद सर। गोपाल सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि MSME के दोनों पहलू पे बात करना चाहता हूँ। पहला पहलू ये है कि MSME एक्ट के अंडर जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं एज MSME एंटिटी कि उसमें क्लोज है कि अंडर 45 डेज आपको पेमेंट करना होता है। तो ये एक मेजर इशू है कि सामने वाला बंदा हमसे जब मार्च एंडिंग नज़दीक होता है या जनवरी 5 आता है तो सामने वाला पूरा परचेजिंग बंद कर देता है बिकॉज ऑफ दैट कि 45 डेज में पेमेंट करना है। तो उस टाइम पे पूरा टेक्सटाइल इकोनॉमी ब्रेक सा लग जाता है 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज राइट कि दूसरे पहलू के ऊपर ध्यान दे तो उसमें एक एक्ट है कि 45 डेज में अगर पेमेंट नहीं आता है तो आप गवर्नमेंट में ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं रिकवरी के लिए, और वो भी हम लोग कर रहे हैं पर वो भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो दोनों में से एक भी ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो इसका एक सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करिए। नहीं, ये जो 43B सेक्शन की बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर आपने 45 डेज में किसी MSME का पेमेंट नहीं किया तो आपको उसका एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेगा। ये लॉ तो पहले से था, उसको स्ट्रिक्टली दोबारा इम्प्लीमेंटेशन किया और क्रेडिट साइकिल 90 से 120 डेज का बिजनेस का है। तो इसको रिकंसाइल करते हुए बट अल्टीमेटली ये वाला प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो, लेकिन एनफोर्समेंट करने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए सरकार इसको स्ट्रिक्टली वो कर रही है। और मतलब इसीलिए बिल डिस्काउंटिंग और उस तरह के प्लेटफॉर्म सरकार ने कोशिश की है कि अल्टीमेटली दिस लॉ वाज earlier also there but was not strictly implemented, but it was the demand from the MSME companies only that large companies because of their financial muscle etc do not make payment to us and our working capital get blocked for longer period. तो सरकार धीरे धीरे पुश कर रही है but it was demand from larger segments of the MSME that this has been put in the larger interest. Economic decisions में तो बैलेंसिंग होती है but this is the issue. और बिल डिस्काउंटिंग यूज़ करना चाहिए मेरे ख्याल से। जो ट्रीट्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यह समाधान है, जो समाधान पोर्टल है उसके अंदर भी सरकार कोशिश कर रही है कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो। धन्यवाद सर। यहीं पे हम हमारा पैनल डिस्कशन का कंक्लूजन ला रहे हैं। आगे रिद्धि बोलेंगे। So, a huge thanks to all our dignitaries for sharing some great insights with all of us. Now, as we move forward with our session, we have Shri Girish Luthra ji with us. Shri Girish Luthra ji is a distinguished entrepreneur and thought leader with over 4 decades of experience in environment, infrastructure and textile. A textile engineering and management graduate, he has made pioneering contributions to sustainability, industrial development and policy making. He is a recipient of prestigious national awards, a patent holder and has served in key leadership roles with CII, SDCCI and FICCI, where he currently leads initiatives to strengthen India's MSME ecosystem. Internationally, he is recognized as an expert on cleaner production and waste management, working closely with global organizations such as UNIDO and UNEP. I would like to call Girish sir on the stage and also would like to call 𝐒𝐻𝐿 sir to felicitate Girish sir. Also, I would like to request Girish sir for a quick 5 minutes insightful session. नीरव, स्वागत कराल.
Good afternoon. Well, I've been listening to our distinguished speakers, and we talk about MSME and support. A lot of expectation MSME has from governments. Believe me, government has a lot of policies. I agree with Gopalji that there are a lot of things which is we who are not using it. So, ignorance is not a bliss, it's a blunder when it comes to business. My young entrepreneurs who are, or to be entrepreneurs, leaders in the industrial trade, commerce, what we need to be clear is, there are challenges of MSME which are lack of finances, very well addressed by our panelists, lack of knowledge, informations. Earlier the thing was that I split this whole problem into two parts. One is micro and small, and one is medium. Now medium is going more towards large setup of thinking and mindsets. The thought processes of small and micro is different, and the needs are different, and that's okay. So MSME no more would remain micro or medium will no more remain as small, because the limit has gone to 500 crores. That FICCI has been working on this for last 20 years to increase the limit, and we finally got it about 8 years back. PM sir also is very keen that we should be all working for MSME. Now, the problems have been discussed, you all are in mind. I'll try and bring in some small solution based what we have experienced and has been success stories across the world, and we can adopt a few of them. Talking of environment first, let's talk about it. There are concerns that MSME may compliance के कारण there are breaks. It's a myth. It's a myth. There are common facilities available from day one, which would be common hazardous waste management facility for toxic hazardous waste from industry. There are common wastewater treatment plants which are treating on common basis, because those are affordable by MSME or larger. Even medium scale industry cannot have an independent plant. So we have to look at those clusters where we have to work based on whatever activity that we would like to do. Select a cluster to establish where these things are present. This is one of the criteria of siting. And if the siting is right and you get these services from day one, you are compliant, we don't need to bother. I appreciate this generation which is now coming to the age group of 20 and 30 today. They don't want to be non-compliant. They love to be compliant. And it's an appreciable act. So that is one part. The other two aspects is, we feel we are too small. MSMEs में ये सोच बहुत नॉर्मल है कि हम छोटे लोग हैं, हमारी से नहीं है. So then उसमें the easiest solution is cluster based approach. When we started in early 90s to work on environment and even on other aspects of improving our companies, we were all small then. And cluster based work, with 5 people got together, we made a group. We call it earlier there were quality circles, we called it as industrial circles. We experimented on sharing each other's knowledge, meet once a month. All 5 of us would share information. While we were doing purchasing, we would do it together. And that was as big as a large one, because the volumes would increase. So even a large company will get down and not talk to you as a small person. Don't need to think that you are small. We need to look at solutions. There is another school of thought
which was initiated in Japan in the 50s and 60s, which was called the wild goose and the duckling theory. Wild goose and duckling theory is based on when we are talking of one leader, large company, and there are small supports. Very well accepted in the automobile sector, and where the smaller plants were also designed by the larger guy. Safety of the smaller plant was done by the larger guy. So all achievements were through them. So with that, it so happened that this theory went so well in MSME in Japan. Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, and n number of them, even today, don't own a single manufacturing plant. They brand it, or they take support. It may be yarn, it could be, Dohare, it could be for textile people here. So that kind of a lookout can be done within us. We are trying to work out a policy. I had a discussion with in one of the RBI meetings and one of the MSME meetings that we can probably bring a support system for such a activity. That is building wild goose and duckling theories. MSME, what I've heard, most of the policies are now already discussed, so I will not take any time on that. My only point is that inferiority complex should be killed by our own selves. We are nowhere inferior. We are a group, muthi bana lo, chalega. So with that, I'll just conclude with one statement which says, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा. Many of us do lot of jumping. अरे उसका काम अच्छा है, मैं वो कर लेता हूँ. ये MSME का एक दूसरा इशू आता है. वो मत करो. कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा. दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे. So with this, all the best to all of you. Thank you, Girish sir. Now I would like to request 𝐁𝐚𝐬𝐬 sir to come to the podium and conclude today's session. पहले तो मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए दिशा फाउंडेशन का मैं बहुत आभारी हूँ, और मुझे बहुत कम टाइम दिया गया है. 1 घंटे का जो डिस्कशन है मुझे 5 मिनट में समराइज करना है, तो अगर कुछ छूट जाए तो माफ़ कीजिएगा. मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो पैनलिस्ट ने बोला और जो बात यहाँ पे हुई, उसमें तीन चीज़ें मुझे पहले ध्यान पे आई. एक चीज़ जो है वो ये है कि आप कैसे MSME खड़ा कर सकते हैं, जो इन्होंने बताया. फिर श्री गोपाल कृष्णा जी ने बताया कि गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प करेगी, क्या फंड देंगे, और श्री महेंद्र दोहरे जी ने बताया कि कैसे बैंक आपको फंड देगी, क्या करना चाहिए. तो ये सब बात से थोड़ी बहुत जो मुझे पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं और जो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हुए हैं. पहली चीज़ है कि आपको कोई भी MSME स्टार्ट करना, तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना आगे बढ़ सकता है. कई बार मैंने ऐसे देखा है कि MSME स्टार्ट किया, 6 महीने 1 साल में फिर उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि आगे उसके पास कोई स्कोप नहीं है. तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा. दूसरी चीज़ जो है वो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा. डिसिप्लिन इन मीन्स कि जैसे कि आपने कोई स्टार्ट किया तो आपको वो चीज़ के लिए टाइम अपना देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है. दूसरा,
आपके जो कस्टमर होंगे या आप जिसके भी साथ डील कर रहे हो उसके साथ आपका एक रेपो, एक डिसिप्लिन, ये जरूरी है। तीसरी चीज़ है लॉयल्टी। तो आपने जहाँ से फंड लिया, आप जिस गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हो, आप जो अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, उसके साथ आपकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लॉयल्टी नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लॉयल्टी में दूसरी भी एक चीज़ है कि जो कई बार कहीं जगह पे नहीं बताई जाती या नहीं डिस्कस होती, वो लॉयल्टी ये है कि आपकी लॉयल्टी आपके देश के साथ भी है। जो गोपाल कृष्णा जी ने बताया या उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि डॉक्यूमेंटेशन होते ही नहीं है। मैं खुद अपनी बात शेयर करूंगा। मैंने हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया, जिस बैंक में मैंने अप्लाई किया उसके जो चेयरमैन है वो मेरे मित्र, वो बैंक का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे मित्र है। फिर भी उन्होंने बताया नहीं ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेरी लोन 1 महीने के बाद पास हुई, मैंने सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। तो जो जरूरी है वो है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए, रखिए कंप्लीट। अगर ये करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और तीसरी चीज जो इन्होंने बताई, बहुत बढ़िया बात की कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत सारे MSME या जो भी बिजनेस करते या उद्योग चलाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी एक जवाबदारी ये धरती के प्रति भी है। तो आप अपना कोई भी बिजनेस करें वो ऐसा करे कि जिससे हम अगली पीढ़ी को ये बोलने का मौका न दें कि इन्होंने ये क्या करके छोड़ दिया है। तो वो एक चीज बड़ी है। और तीसरी चीज है कि अपग्रेडेशन। आपने कोई MSME स्टार्ट किया तो आप ये हर रोज देखिए, हर बार सोचिए, हर मिनट पे सोचिए कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो इंडस्ट्री है, मेरी जो इंडस्ट्री, उसको मैं कैसे अपग्रेड करूं। जो अपने को अपग्रेड नहीं करता, जो MSME या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी चीज अपग्रेड नहीं होते ना, वो मार्केट से बाहर हो जाती है। बहुत सारी ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नोकिया मार्केट से बाहर हो गई, ठीक है, फोटोग्राफी वाले कैनन मार्केट से बाहर। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको अपने खुद को, अपने MSME को अपग्रेड करना है। तीसरा, उसमें डाइवर्जन की भी जरूरत है कि अगर ये मेरा जो MSME है उसमें एक पॉइंट आएगा, सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, तो आपको डाइवर्ट कैसे करना है। सूरत में से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से जिन्होंने अगर डाइवर्ट नहीं किया ना तो उनके बिजनेस खत्म हो गए, उनकी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो वो एक खास जरूरी है। तीसरी बात जो गोपाल कृष्ण जी ने बताई कि गवर्नमेंट इतने सारे फंड दे रही है, MSME को लेने ही चाहिए। अगर वो कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट तो ले, अगर वो फंड लेंगे ना तो बहुत फायदा है। वो अपने आगे बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसका अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो वो एक आप चीज ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट के जितने भी लाभ मिल सकते हो आप लीजिए। और जो एक लुथरा जी ने बताया कि अपने को बदलने की तैयारी रखनी चाहिए, खुद को बदलने की, अपने बिजनेस को, अपने MSME को। शायद लुथरा जी को याद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सबसे पहला वेस्ट मैनेजमेंट प्लान डाला था, आई थिंक गुड़िया उसके पास, ठीक है। तो आई वॉज देयर एज अ जर्नलिस्ट। मैंने वो उनका वो जो प्रोजेक्ट था वो मैंने कवर किया था। शायद आज साल 20 साल हो गए होंगे, लुथरा जी 25 साल हो गए। उन्होंने वो सोच तब देखी थी जो लोग आज देख रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसमें ये कर सकता हूँ, इसमें ये कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ कि अपना जो भी इंडस्ट्री हो, जो भी बिजनेस हो, उसमें एक ध्यान ये रखिएगा कि टर्नओवर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉफिट कैसा है, आपको बैलेंस शीट आपकी कैसी रहती है, वो बहुत जरूरी है। मेरे एक मित्र थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्लास ज्वाइन किया, माइंड मास्टर वगैरह सब। तो उन्होंने उस क्लास में बताया कि साहब आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो, वो कर सकते हो। उन्होंने सर 1 यूनिट्स को 5 यूनिट बना दिए, 5 जगह रेंट पे ले लिया, सबको रख लिए। आखिर हुआ क्या, उनकी पार्टी डूब गई। तो जो जरूरी है वो ये भी है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना सेट कर सकते हैं। अगर आपने ये सब समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू। और मैं दिशा फाउंडेशन की ओर से आभारी हूँ हमारे यहाँ आए हुए स्पीकर्स का। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मंचासीन समस्त अतिथियों से एक बार विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपना स्थान नीचे ग्रहण करें और हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच डॉक्टर मनसुख मांडविया जी पधार रहे हैं, तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जहां वो हैं वहीं रहें और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी लोग पहले थोड़ा आगे आ जाएं, फिर अपने अपने यथास्थान पहुंच जाएंगे।